Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Satma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Satma Bandhamoye Savadana Mate Bandhamoye Savadana Mate Jahara Prasade Vai Evavatorya Jai Jahara Prasade Vai Evavatorya Jai Krishna Prapti Hoy Jana Hoite Krishna Prapti Hoy Jana Hoite Guru Mukha Padma Vakya Chite Te Korya Aikya Guru Mukha Padma Vakya Chite Te Korya Aikya Arana Kori Hamane Acha Arana Kori Hamane Acha Shri Guru Charane Rate Aise Utama Gati Shri Guru Charane Rate Aise Utama Gati Jai Prasade Pure Sarva Asha Jai Prasade Pure Sarva Asha Kakudam Diloche Jame Jame Prabhu say Chakudan Diloche Janme Janme Prabhu say Deve Gyan Hriday Prakasheta Deve Gyan Hriday Prakasheta
Prema Bhaktiya hoite Abhijave nashayate. Prema Bhaktiya hoite Abhijave nashayate. Vede Gaya Hara Charita. Vede Gaya Hara Charita. Shigaru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Shigaru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Lokana Lokera Jivana. Lokana Lokera Jivana. Ha ha Prabhu Kora Doya Deha More Pada Chaya. Ha ha Prabhu Kora Doya Deha More Pada Chaya. Ha ha Prabhu Kora Doya Deha More Pada Chaya. Ha ha Prabhu Kora Doya Deha More Pada Chaya. Eveyas Goshuk Se Bhuvana. Eveyas Goshuk Se Bhuvana. Prabhupada Patita Pavana. Srila Prabhupada Patita Pavana. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pasyacha Deshatarane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura
Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai go Haribo, 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 go Haribo. Nitai go Haribo, 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 go Haribo. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radha Madana Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jagannath, 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 Jagannath. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Haribo, 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 Go Haribo. Nitai Go Haribo, 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 Nitai Go Haribo. Srila Prabhupada ke Jai Vishnupada Paramahamsa Parivrajikacharya Stotar Satashi Srimad Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Nitya Vishnu Vishnupada Paramahamsa Parivrajikacharya Stotar Satashi Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaja ki Anant Koti Vaishnava Vrinda ke Namacharya Srila Haridas Thakur ke Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gopat Vrinda ke Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kun Radha Kun Giri Govardhana ki Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Shrimati Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Shri Prabhupada Guru Puja ke Samaveda Bhakti Vrinda ke Nitai Go Premanande. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories Shri Shri Guru Shri Gauranga Srila Prabhupada ki Jai. Puja translation. The lotus feet of my spiritual master are the only way by which we can take pure devotional service. We bow down to the lotus feet, very kind reverence. His face will cross over the ocean of the suffering and pain in the mercy of Krishna. The holy wishes to have a consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to the lotus feet is perfection that fulfills all desires. He opens the dark and lights and fills our heart with transcendental knowledge. He is our Lord, God of the world. Come and stand in the name, by him all is destroyed. The very scripture Srimad said, our spiritual master is the ocean of mercy, defending the true and Lord of master devotees. O master, please be merciful and do us the good share of his feet. The famous spirit of the three words, take gently to my daughter's feet. Srila Prabhupada.
good prasad. Did it do that to you yesterday? Hare Krishna. So very happy to be here in Ujjain. In my third, about 3 times. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Janavallabha Girivaradhari. Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashodanandana Prajajana Ranjana. Yashodanandana Prajajana Ranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashodanandana Prajajana Ranjana. Yashodanandana Prajajana Ranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai Go Premanandi Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading Srimad Bhagavatam. Who's translating? This is text 5, 6, and 7. Chapter 5. 10, 5. So reading Srimad Bhagavatam, chapter 5. The meeting of Nanda Maharaj and Vasudev. Beginning with text 5. तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 5वें अध्याय नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट नामक श्लोक से पाठ करेंगे। ये 5वां श्लोक है। So I'll read the translation and then you read it in Hindi, okay? Okay. We're going to do which shloka is on the board? 5? 5th. Okay. Somangal Yagiro Vipra सौमंगल्य गिरो विप्रः Sutta Magada Vandinaha सूतमागध वंदिनः Gayakascha Jagurnedur गायकाश्च जगुर्नेदुर् Beryo Dundu Bayo Muhu उभेर्यो दुन्दुभेयो मुहुः Somangalya Giro Vipra Sutta Magada Vandinaha Sutamagatamanditaha Gayakascha Jagurnedur Gayakascha Jagurnedur Beryo Dundu Bayo Muhu Veryo Dundu Payomuhu Samangalya Giro Vipraha Sutamagada Vandinaha Sutta Mangata Vandita Gayakascha Jagurnedur Kascha Jagurnedur Veryo Dundu Payomuhu Beryo Dundu Bayo Muhu Somangalya Giro Vipra Sutamagada Gayakascha Jagurnedur Gayakascha Jagurnedur Bheryo Dundu Bhayomuhu Beryo Dundu Bayo Muhu Mangala Gira Vipra Sutamagada Vandina Gayakascha Jagurnedur Bheryo Dundu Bhayomuhu. Sumangalya Gira, whose chanting of mantras and hymns purified the environment by their vibration. जिनकी वाणी से निकले मंत्र तथा स्तोत्र वातावरण को शुद्ध करते थे। Vipra, the Brahmanas. ब्राह्मण गण, Sutta, सूत, experts in reciting all the histories. इतिहास गाने में पटु लोग, Magadha, मागध, experts in reciting the histories of special royal families. राज परिवारों के इतिहास गाने में पटु लोग, Vandana, वंदिना, general professional reciters. सामान्य वाचक, Gayaka, गायका, singers. गवैये, Cha, च, as well as. भी, Jaghu, जगुहु, chanted. उच्चारण किया, Neduhu, नेदुहु, vibrated. बजाया, Berya, भेर्यः, a kind of musical instrument. एक प्रकार का वाद्य यंत्र, Dundubaya, दुंदुभयः, a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा, Muhu, मुहुः, constantly. निरंतर। Translation by His Divine Grace A.C. The followers of His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And this is by Bhaktivedanta Swami Prabhupada till chapter 13. The Brahmanas recited auspicious Vedic hymns which purified the environment by their vibration. The experts in reciting old histories like the Puranas, the experts in reciting the histories of royal families, and general reciters all chanted while singers sang, and many kinds of musical instruments like berries and dundubis played in accompaniment. ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भेरी, दुंदुभी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। I'll just chant the shlokas here. Braja samrishta sansikta dva rajira grihantaraha chitra dhvaja pataka srak chalya palvala toranai. Brajapur, the residence of Nanda Maharaj, was fully decorated with varieties of festoons and flags, and in different places, gates were made with varieties of flower garlands, pieces of cloth, and mango leaves. The courtyards, the gates near the roads, and everything within the rooms of the houses were perfectly swept and washed with water. नंद महाराज का निवास व्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। आंगन, सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार का पानी से धोई गई थीं। Text 7. Gavo Vrisha Vatsatara Haridra Taila Rushita Vichitra Dhatu Barahasrang Vastra Kanchana Malinaha. The cows, the bulls, and the calves were thoroughly smeared with a mixture of turmeric and oil, mixed with varieties of minerals. Their heads were bedecked with peacock feathers, and they were garlanded and covered with cloth and golden ornaments. गौवों, बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था, उन्हें मालाएं पहनाई गई थीं और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था। Should we go sentence by sentence for the purport? Better? Sentence by sentence? Okay. Purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead has instructed in Bhagavad Gita 1844, Krishigo Rakshya Vajanang Vaishya Karma Swabhavajam. भगवान के भगवत गीता 1844 में आदेश दिया है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के गुण हैं। Farming, cow protection, and trade are the qualities of work for the Vaishyas. खेती करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के गुण हैं। Nanda Maharaj belonged to the Vaishya community, the agriculturalist community. नंद महाराज वैश्य जाति के खेतीहर थे। How to protect the cows and how rich this community was are explained in these verses. किस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए और यह वैश्य जाति कितनी संपन्न थी, इसी का वर्णन इन श्लोकों में हुआ है। We can hardly imagine that cows, bulls, and calves could be cared for so nicely and decorated so well
with cloths and valuable golden ornaments. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गौवें, बैल तथा बछड़ों की इतनी सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्रों तथा बहुमूल्य सुनहरी गहनों से इस तरह सजाया जाता होगा। How happy they were. वे लोग कितने सुखी थे। As described elsewhere in the Bhagavatam during Maharaja Yudhishthir's time, the cows were so happy that they used to muddy the pasturing ground with milk. श्रीमद् भागवत में अन्यत्र वर्णन आया है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गौवें इतनी सुखी थीं कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त हो जाती थी। This is Indian civilization. यह है भारतीय सभ्यता। Yet in the same place, India, Bharatvarsha, how much people are suffering by giving up the Vedic way of life and not understanding the teachings of Bhagavad Gita. फिर भी उसी भारतवर्ष में न जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ने तथा भगवत गीता की शिक्षाएं न समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। Okay. So this is a description of the life of Braj, Vrindavan, cow protection, bulls, calves, milk, dung, urine, all beautiful. तो ये वृंदावन के जीवन का वर्णन है जहाँ पे कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, गाय, बैल, बछड़ों इत्यादि सभी का वर्णन आया है। So I came to Miami the summer of 76. We had New Naimisharanya, 10 acres, and we had 5 beautiful cows, 80 mango trees. तो मैं न्यू नैमिषारण्य में 77 साल के ग्रीष्म ऋतु में आया था और वहाँ पे कई सारी गायें, कई सारे आम के वृक्ष इत्यादि थे। We had marigold flowers and all kinds of roses, and we would send puja paraphernalia to many temples throughout the United States. हमारे वहाँ बगीचे थे जहाँ कई प्रकार के फूल थे, कई प्रकार के गुलाब थे और हम कई मंदिरों को पूजा इत्यादि की सामग्री मुहैया कराते थे। So during the festivals, we always had mango leaves and marigold flowers hanging in all the doorways and decorating everything, like they had here many decorations. And तो त्योहार के समय हम देखते थे कि वहाँ पे आम के पत्ते एवं कई फूलों से साज सज्जा की जाती थी। we had swans, ducks, they had orange bellies because of eating so many mangoes. वहाँ पे कई सारे हंस और बतख भी थे और उनके पेट पूरी तरह से पीले हो चुके थे क्योंकि वे बहुत सारे आम खाया करते थे। We had mango ice cream, mango bread, mango, lots of mangoes. तो हम मैंगो की आइसक्रीम, मैंगो की ब्रेड इत्यादि सब हर चीज में आम हुआ करता था। But it's very opulent, very tropical, like maybe like Navadvip, or just palm trees and coconuts and mangoes and a lot of sunshine. तो ये ठीक भारतीय परिवेश की तरह था जहाँ पे बहुत सारी धूप होती थी, कई सारे आम के वृक्ष थे, कई सारे नारियल के वृक्ष थे। The mood was for Sankirtan. Everybody was, I remember when I first came, they said, oh, you would be good on Sankirtan, book distribution. I said, what's that? और उस समय मनोभाव था और माहौल था ग्रंथों के वितरण का, और जब मैं आया तो हर किसी ने मुझसे कहा कि हाँ तुम बहुत अच्छे से ग्रंथ वितरण कर सकते हो, और मैं विचार कर रहा था ये ग्रंथ वितरण संकीर्तन क्या वस्तु है। So by Prabhupada's mercy, we were living in a little paradise, very beautiful, with the cows and natural greenery. So it was very nourishing, very spiritually nourishing. तो श्रील प्रभुपाद के कृपा से हम एक छोटे से स्वर्ग तुल्य स्थान पर रहते थे जहाँ पे बहुत सारी गायें थीं, और ये स्थान हमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता था। And it was called New Naimisharanya because on our day off we would walk in the mango field reading Bhagavatam and appreciating all the sages. और इसे न्यू नैमिषारण्य भी कहा जाता था क्योंकि हम भागवतम को
आम के वृक्षों के बीच में बैठ के पढ़ते थे और विचार करते थे कि ये कितना सुखद अनुभव है. Although austere conditions, we had like maybe 15 devotees per room. You had to lay down and roll it up, and everybody was a processing, but everyone was excited for Mangal Aarti and going to the temple early. It was very exciting. और ये बहुत ही तपस्या का समय था. एक छोटे से कमरे में हम करीब 15 लोग रहते थे और बड़ी ही व्यवस्था करके हमें बिछाने लगाने होते थे, किंतु हर कोई सवेरे से लेकर शाम तक सवेरे जल्दी उठने से कीर्तन करने को लेकर बड़ा रोमांचित रहता था. And the kirtans were very nice, like here we're having nice kirtans, so everyone was jumping and dancing ecstatically. और बहुत ही सुंदर कीर्तन हुआ करते थे, जैसे यहाँ पे हमने देखा हर कोई भावातिरेक में नृत्य करता था और कूदा करता था. So Prabhupada is giving us Vrindavan in all our temples. तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे सभी मंदिरों में हमें वृंदावन प्रदान किया है. Because in Vrindavan they rise early and they're singing the glories of Krishna. क्योंकि वृंदावन में वे सवेरे जल्दी उठते हैं और भगवान कृष्ण की महिमा को गाते हैं. And by singing the glories of Krishna, this is their way of expressing their love and remembrance of Krishna and his pastimes. और कृष्ण की महिमा को गा के वे कृष्ण की लीलाओं को और कृष्ण की महिमा को याद करते हैं और इस प्रकार से उसका स्मरण करते हैं. So we spent many years in the airport distributing books, Miami Airport, and traveling Sankirtan. That was a focus because book distribution is a way of keeping busy in devotional service and giving others an opportunity to hear about the purpose and goal of life. तो हमने मियामी के हवाई अड्डे के चारों ओर कई वर्षों तक ग्रंथों का वितरण किया, क्योंकि ग्रंथों के वितरण से हम जीवन के उद्देश्य के बारे में सभी को बता सकते हैं. One interesting story, my friend Radhalingana Prabhu, we were distributing books in West Palm Beach Airport. तो एक बहुत अद्भुत घटना है. वेस्ट पाम बीच एयरपोर्ट में मेरे मित्र रामलिंगा प्रभु ग्रंथों का वितरण कर रहे थे. It was a Sunday, so we would drive back to Miami, which is an hour and a half drive for a Sunday feast program. तो ये रविवार का दिन था और उस दिन रविवारी प्रीति भोज कार्यक्रम भी था, तो हम लोग 1 घंटे की दूरी पर गाड़ी चलाकर आए थे. And we were young brahmacharis, so there was one fruit vendor gave us a whole case of grapefruits. I don't know, in Florida they're very popular, grapefruits and orange, but grapefruits, organic grapefruits. तो उस समय हम बहुत तरुण ब्रह्मचारी थे, तो वहाँ के एक फल बेचने वाले ने हमें एक टोकरी भर के अंगूर दिए थे. Anyway, grapefruit, they're not too big. Grapefruits. ग्रेपफ्रूट्स. No, grapefruits. ग्रेपफ्रूट एक बड़े प्रकार का फल है. Sorry for. Anyway, I just found it interesting because we ate the whole case, the two of the brahmacharis, chanting Hare Krishna. We ate the whole case going down. We were so excited, you know. तो हम लोग तरुण ब्रह्मचारी थे, हम हरे कृष्णा जप कर रहे थे और पूरे के पूरे ग्रंथों का वितरण कर रहे थे. So और हम बड़े उत्सुक थे. There's the benefits of book distribution. Krishna rewards you nicely. तो ये ग्रंथ वितरण करने का पुरस्कार था. कृष्ण ने हमें बहुत अच्छा पुरस्कार दिया था. Yeah. But this is very interesting how Nanda Maharaj went to meet Vasudev, and how they celebrated the birth ceremony of Krishna. Of course, Vasudev brought Krishna to Nanda Maharaj, but Nanda Maharaj celebrated the birth ceremony of Krishna in a very festive way. तो ये बड़ी रोचक घटना है किस प्रकार से नंद महाराज और वासुदेव ने कृष्ण जन्माष्टमी का पालन किया. यद्यपि वासुदेव कृष्ण को लेकर नंद महाराज के पास देकर आए थे, किंतु नंद महाराज और वासुदेव ने एक साथ जन्माष्टमी का पालन किया. Just like we had Balaram's appearance day and then Janmashtami, so all of you, all of us were very excited. We dressed nicely and we came to sing and dance and celebrate the special occasion. ठीक बलराम जयंती के समान हम सभी लोगों ने अच्छे वस्त्र पहन के यहाँ पे आके बड़े अच्छे से त्योहार मनाया और इस प्रकार से हम इस And they made a point that how is it simple agriculturalists just simply taking care of cows and bulls and milk and yogurt and various products, they were very, very wealthy.
तो ये बड़ी रोचक घटना है कि कैसे ये बड़े ही सीधे साधे खेतीहर किसान जो कि खेती बाड़ी करते थे, इनके पास इतने सारे दूध के पदार्थ मौजूद थे। In this Kali Yuga, technology, industrialization, they're thinking in this way we will become happy and wealthy. कलयुग के लोग विचार करते हैं कि तकनीक और औद्योगिकरण के माध्यम से हम सभी संतुष्ट हो जाएंगे। But with technology and industrialization, you cannot produce grains and fruits and milk and ghee and butter, which are required for sacrifice. किंतु प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण की सहायता से हम दूध, घी, अनाज इत्यादि नहीं उगा सकते जो कि यज्ञ करने के लिए महत्वपूर्ण है। Just like when Kamsa's bad associates said, if we kill all the cows and kill all the brahmanas, there'll be no ghee and no sacrifice to Vishnu, and then Vishnu will die. जैसे कि कंस के अनुचरों ने कहा था, यदि हम सभी ब्राह्मणों और गायों को मार दें तो कोई घी नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा और इस प्रकार से विष्णु मारा जाएगा। But they were living, they had jewelry on the cows. Nanda Maharaj gave away 200,000 cows with nicely decorated with jewels. किंतु इनके पास इतनी संपदा थी कि ये गायों को भी जेवरात पहनाया करते थे। नंद महाराज ने 2 लाख गायों को जेवरात पहनाए थे, आभूषण पहनाए थे। So Prabhupada was making specifically at the end of the purport, he said how this is Indian civilization. प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं कैसे ये वास्तविक वैदिक जीवन शैली है। This is Bharata Bhumi te hoila manusya janma jar janma sarataka kori khara parupaka. Very, very pious birth. ये है भारत भूमि, ये है भारतवर्ष, भारतीय सभ्यता। He said people are suffering because of giving up the Vedic way of life and not understanding the teachings of Bhagavad Gita. प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग वैदिक जीवन शैली को छोड़ने के तथा भगवत गीता की शिक्षाएं न समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। And people asked Prabhupada, why you have come here? He said, to remind you what you have forgotten, that Jivera Swarupoy Krishna and Nityadas, we're all servants of Krishna, and Krishna is the supreme Lord of everyone. प्रभुपाद से पूछा गया आप यहाँ क्यों आए हैं, तो प्रभुपाद ने बताया मैं आप सभी को ये स्मरण कराने आया हूँ कि भगवान कृष्ण परमेश्वर भगवान हैं और हम सभी उनके नित्य सेवक हैं। All the great acharyas, all the scriptures, Puranas, Itihasas, they all declare Krishna as the supreme Lord. सभी इतिहास, पुराण, सभी महान ग्रंथ ये भगवान कृष्ण को परमेश्वर के रूप में घोषित करते हैं। And Dharma, religion, comes from God, from Krishna. और धर्म भगवान कृष्ण से ही आता है। As Vyasadeva, he compiled the Vedic literatures for our benefit so we can understand how to properly behave, so we can awaken our love for God. और वेद व्यास के रूप में वे सभी वेदों का संकलन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि भगवान का परिचय क्या है और हम भगवत प्रेम को फिर से जागृत कर सकें। And Krishna personally appeared, Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam dharma samstarpanartaya sambhavami yuge yuge. In order to re-establish religious principles, he personally comes. धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। But atheistic, non-believers, they'll think, oh, how God can come. He did not come. This is just their illusion and their being the lowest of mankind. किंतु पाखंडी नास्तिक कहते हैं कि भगवान कैसे आ सकते हैं। Namang dushkritino mudha prapajate naradama. That those who are atheistic and foolish, they never accept the authority of the Supreme Lord. जो नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, ये परमेश्वर भगवान की सत्ता को कभी भी स्वीकार नहीं करते। And especially in Kali Yuga, some of us may not have been that religious, but still we were attracted by the way Srila Prabhupada presented Krishna and the Vedic teachings. हो सकता है कलयुग में हम इतने धार्मिक न भी हों, किंतु हम श्रील प्रभुपाद के प्रस्तुतिकरण से
कैसे उन्होंने वैदिक साहित्य के माध्यम से कृष्ण को प्रस्तुत किया, इससे आकृष्ट हो गए। This International Society for Krishna Consciousness is not based on sentiment, sentimentalism and fanaticism. ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पागलपन और सनकीपन पर आधारित नहीं है। It's based on logic, reason and authority. ये तर्क और सत्य पर आधारित है। Because if one with an open mind, open heart, in the association of devotees hears Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, hearing Krishna Katha, naturally it cleans the heart. यदि कोई खुले मस्तिष्क से, खुले हृदय से कृष्ण कथा को सुनेगा तो उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा। And how do we know that the heart is becoming cleansed? Is that we become attracted to hearing more Krishna Katha. और कैसे समझें कि हमारा हृदय पवित्र हो रहा है? ऐसे समझें जब हम कृष्ण कथा को अधिक से अधिक सुनने के लिए आकर्षित हों। Satam prasangam mama virya sangvidho. In the assembly of devotees, that faith increases and the potency of the katha becomes more powerful. सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। भक्तों की संगति में इस कथा की शक्ति बढ़ जाती है और हम इसको सुनने के लिए आकर्षित होते हैं। Sometimes people want to live alone in the sacred place and just chant and not be bothered by so many others. But Bhaktisiddhanta Saraswati said, no, what kind of cheater are you? Because your mind will only think of money and women. कभी कभी कुछ लोग निर्जन स्थान पर भजन करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि आप एकांत में जप करेंगे तो आपका मन केवल धन और परस्त्री के बारे में विचार करेगा। If you have a little stick, you can easily break it. यदि एक छोटी सी डंडी हो तो आप सहजता से उसे तोड़ सकते हैं। But if you group many sticks together, you cannot break them. किंतु आप कई छड़ों को, डंडियों को एक साथ लें तो उसको तोड़ना संभव नहीं है। So these temples and and Prabhupada's books and teachings are our support system. तो ये मंदिर और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं वास्तव में यही हमारी आधारभूत हैं। We should not think that, oh, I've already been doing this for 30, 40, 50 years. I can skip Mongol Aarti, I can skip Tulsi Puja, I can skip Guru Puja, and once in a while I'll give a class, but I won't go to class. We should follow Prabhupada's instructions. He was always asking, where is so-and-so? Where is so-and-so? No other business than being here in Bhagavatam. कभी कभी हम विचार कर सकते हैं, ओ मुझे 30, 40, 50 वर्ष हो गए, अब मुझे मंगल आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा इत्यादि करने की क्या जरूरत है? मैं कभी कभी कक्षा दूंगा लेकिन कक्षा में भाग नहीं लूंगा। नहीं, श्रील प्रभुपाद हमेशा प्रश्न किया करते थे, अमुक व्यक्ति कहाँ है, अमुक व्यक्ति कहाँ है? तो इस समय हमारे पास मंदिर में रहना छोड़कर और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। Later in the 10th canto, Krishna sends Uddhava to Vrindavan to see how intense is the love of Nanda, Yashoda and the gopis and gopas for Krishna. श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में हम बाहर देखते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण उद्धव को वृंदावन भेजते हैं, ये दिखाने के लिए कि गोपियों का, नंद महाराज का, यशोदा माँ का उनके प्रति प्रेम कितना प्रगाढ़ है। So when Uddhava arrived, was greeted very nicely by Nanda and Yashoda, and Nanda Maharaj and Mother Yashoda were just out of love and affection expressing their extreme love for Krishna. तो जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो उस समय नंद महाराज और यशोदा माँ कृष्ण के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त कर रहे थे। And what are the activities of the gopis and gopas? They're churning butter, they're taking care of the cows, and they're singing all day Krishna Yashomati Nandana Braja Varunagara. तो सभी गोप गोपियां वहां पर अपने गायों को दूह रहे थे, मक्खन बना रहे थे और सारा दिन कृष्ण कथा कर रहे थे और इस प्रकार से यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। So even though we're in a blind Kali Yuga full of darkness, Srila Prabhupada is introducing Bhagavat Dharma and also
varnashram dharma. यद्यपि हम इस अंध कलयुग में रहते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद ने हमें भागवत धर्म और वर्णाश्रम धर्म से परिचय कराया है. First of all, we're cultivating an understanding of how one should behave. There are many ceremonies for before birth, after birth. There are many ceremonies involved in Vedic culture, and they're all meant to enhance our understanding of life. वैदिक सभ्यता में कई प्रकार के संस्कारों की संस्तुति की गई है और इसकी सहायता से हम जीवन के मर्म को समझ सकते हैं. We see the trouble in the world. People are fighting, they're frustrated, they're unhappy. हम इस जगत में सभी कष्टों को देख सकते हैं. लोग खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, आपस में झगड़ रहे हैं. Adhyatmika, Adhidaivika, Adhibodhika, the demigods, Mother Nature's chastising so many earthquakes and so many floods and disasters are there in the world. आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक क्लेश, प्रकृति माँ हमसे प्रसन्न नहीं है. इतने प्रकार के भूकंप आ रहे हैं, इतने प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं. We see, if you see anything on the news, it's all bad. It's all very bad. Either pandemic, war, suffering, anxiety, frustration. यदि आप समाचार पत्र को देखें, खबरों को देखें, तो देखेंगे सब तरफ केवल नकारात्मक ही समाचार फैले हुए हैं. युद्ध हैं, भीषण विकंपाएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, केवल यही खबरें आती हैं. And that's not just now. That has since time in the material world, Dukkaliyam Shashvatam. It's a place of temporary place of misery. तो ये कोई नई बात नहीं है. ये भौतिक प्रकृति वास्तव में दुखों की अस्थायी जगह है. Brahma Bhuvanaloka Punaravartano Arjuna. From the highest planet, Brahmaloka, the heavenly planets where life is so long, so many enjoyments are available. Still, birth, death, old age, and disease are there. ब्रह्म भुवनान लोकाना पुनरावर्तिन अर्जुना. भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे छोटे ग्रह तक जीवन मृत्यु का चक्र लगा रहता है. So Srila Prabhupada is giving us a special opportunity, giving us a window of the spiritual world so that we can see what is going on in eternal life. श्री प्रभुपाद हमें एक विशेष सुअवसर प्रदान करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है, वे इसके बारे में हमें बताते हैं. And throughout the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the description of the Brahminical godly qualities are there. और पूरे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में ब्राह्मण गुणों के बारे में बहुत विशद वर्णन किया गया है. And it's not that we can artificially try to, how do I develop tolerance, mercy, cleanliness, truthfulness, austerity, and so many rules and regulations. How do we accomplish such a huge task? तो ऐसा नहीं है कि कृत्रिम रूप से हम इन गुणों को विकसित करें, जिसमें शौच हो, तपस्या हो, सरलता हो, क्षमाशीलता हो. इन सबको हम कृत्रिम रूप से विकसित नहीं कर सकते. Yasyasti bhaktir bhagavati kinchana savargunais tatra samasate sura. That one who's devotedly performing his devotional service, all the good qualities of the demigods become manifest, awakened within your very being. यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा. जो भी अकिंचन निष्किंचन भाव से भगवत भक्ति का अनुशीलन करता है, उसमें देवताओं के समस्त गुण दृष्टिगोचर होते हैं. So Srila Prabhupada, although Kalau Sudra Sambhava, everyone is born low class in this age of Kali Yuga. कलौ शूद्र संभव. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में हर कोई नीच जन्म से ग्रसित है. But they're making brahmanas by initiation, but not only that one should be qualified. Prabhupada is not doing something cheap like selling some mantra for some money and having cheap followers. He wants that people who are following are actually qualified to receive their initiation. श्रील प्रभुपाद दीक्षा के माध्यम से मंत्र प्रदान करते हैं, किंतु ये ऐसा नहीं है कि हम पैसे देकर मंत्र प्रदान करते हैं. श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम गंभीरता से इस प्रक्रिया का अनुशीलन करें.
So anyone who wants to accomplish anything in life, they have to be full of enthusiasm, determination, and patience. They need to actually be excited to perform that activity to become qualified in that field. यदि हम जीवन में किसी उच्च स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारे पास उत्साह, निश्चय और धैर्य होना चाहिए, और सिर्फ ये होने से ही काफी नहीं है, हमें इसका अभ्यास भी करना होता है. And many times Prabhupada say this is simply entertainment, simply enjoyment, chanting, dancing, feasting, festivals. I mean, we have a party every other day practically, isn't it? There's so many festivals. और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में ये प्रक्रिया कितनी मनोरंजक है. केवल जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाचिए, खाइए, हर रोज हम लोग त्योहार मनाते हैं. Krishna is in everyone's heart. Sarvasya chahang hridi sanavishto matat smriti jnanam upohanam cha. He's giving everyone knowledge, remembrance, and forgetfulness. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो. भगवान कृष्ण सभी के हृदय में अवस्थित हैं और सभी को स्मृति, विस्मृति और ज्ञान प्रदान करते हैं. And because he's sitting in our heart next to the Paramatma, next to the Jivatma, Yeyatamang prapajate tangstatavajamyaham. Krishna knows how that if we want to surrender, he'll give us intelligence how to go further in Krishna consciousness. चूंकि भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में जीवात्मा के साथ में अवस्थित हैं, इसलिए वे हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर हों. Not that you're going to lock yourself in a room and read the whole Bhagavad Gita and study and all the shlokas and the Bhagavatam, and simply by your own endeavor, you're going to awaken your love for God. ऐसा नहीं हो कि एक बंद कमरे में हम भगवत गीता या भागवतम का अध्ययन करें और इस प्रकार से बंद कमरे में ही हम भगवत प्रेम का विकास कर लें. ये संभव नहीं है. Because I've been doing this almost 50 years, but every time I read, it's a newer and fresher understanding. So by doing devotional service, Krishna is giving you more and more realizations as you want them. मैं पिछले 50 वर्षों से ऐसा कर रहा हूँ, किंतु जब भी मैं भागवतम को पढ़ता हूँ तो मुझे एक नई अनुभूति का अनुभव होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं और हमें हृदय से नई नई अनुभूतियां प्रदान करते हैं. Everyone may say, "Oh, I want Krishna. I want spiritual life." They may say like that. हर कोई कह सकता है, ओ मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जीवन चाहिए. But we have to control the mind. That means, what's the first thing? Got to take rest early on time. किंतु हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि हमको रात को जल्दी सोना होगा. Because when that early morning comes, time for you want to be enthusiastic that yes, I will go greet the Lord and sing and dance with the devotees, not feeling, oh, why so much trouble? I'd rather sleep in. ताकि भोर में हम जल्दी उठ सकें और जाके भक्तों के साथ नाचे गाएं. ऐसा नहीं कि ओ इतना आलस के कारण मैं उठ नहीं सकता, बड़ी तकलीफ हो रही है. And also steady reading. We have to read just by hearing this katha, not just in a casual way, but really with heart and really wanting to be part of what's being conveyed in the message. और हमें नियमित रूप से ग्रंथों का भी पाठ करना है. कृष्ण कथा, इसका श्रवण करने से, इसको पढ़ने से श्रील प्रभुपाद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हमें प्रकट होता है. So it says that we should follow or serve a resident of Vrindavan, and that's Srila Prabhupada. He's our resident in Vrindavan that we're following. ऐसा कहा जाता है कि हमें वृंदावन वासी का अनुसरण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और ऐसे वृंदावन वासी जिनका अनुसरण हम करते हैं, ये हैं श्रील प्रभुपाद. In Krishna's most compassionate mode, he appeared as Chaitanya Mahaprabhu. और अपने सबसे परम कृपालु अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं. Krishna Varnam Tisha Krishnam Sangopam Gastra Parashidam Jagnai Sankirtan Prayar Yajanti Hi Sumedha Saha. One who's intelligent, he'll worship Chaitanya Mahaprabhu, who's here with all his associates. जो मेधावी है, जो बुद्धिमान है, वो चैतन्य महाप्रभु को उनके सभी अनुचरों के साथ उनकी सेवा करेगा. And when the Lord comes, he comes with all his associates. जब भगवान आते हैं वे अपने सभी पार्षदों के साथ आते हैं. So
We have the Goswamis who are personally instructed by Chaitanya Mahaprabhu. तो हम गोस्वामियों से परिचित हैं जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शिक्षित किया था. Even though Goswamis were born in a high Brahmin family, they were serving Nawab Hussain Shah, the Muslim government, so they were ostracized or even considered like Shudras. यद्यपि गोस्वामियों का जन्म उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तथापि चूंकि वे नवाब हुसैन शाह की मुसलमान सरकार में सेवा करते थे, इसलिए ब्राह्मण समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था. Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear from Ramananda Roy, who was born in Shudra and was a government governor. चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से श्रवण किया, जो कि शूद्र परिवार में जन्म लिए थे, किंतु ये बंगाल के गवर्नर थे. What's the verse? Kiba vipra kiba nashi shudra keni no ye Krishna tattva veta se guru hoy. So one who understands the science of Krishna, he's accepted as guru. किवा विप्र किवा शूद्र न्यासी के नाय जय कृष्ण तत्वता से गुरु है. तो कोई किसी भी सामाजिक स्थिति में क्यों न हो, यदि वो कृष्ण को जानता हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए. So Krishna is appearing again and again. So he just appeared as Chaitanya Mahaprabhu, and the Bhagavatam is also his incarnation. तो भगवान कृष्ण बार बार आते हैं. कुछ दिनों पहले ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, और श्रीमद् भागवतम भी भगवान का ही अवतार है. So the Goswami scrutinizingly studied all the scriptures and put them in such a way which will be suitable for our understanding. तो गोस्वामियों ने समस्त ग्रंथों का बड़े सूक्ष्म रीति से पाठ किया और उन्हें इस प्रकार से संकलित किया ताकि हम उनका अर्थ समझ सकें. And then from Goswamis, Srila Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada dedicated his life to his Guru Maharaj and the spreading of Krishna consciousness. गोस्वामियों के पश्चात श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. So present day, Prabhupada was in Radha Damodar temple taking shelter of Rupa Goswami, the leader of the Goswamis, and was empowered to further deliver this message throughout the whole world. श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में भगवान कृष्ण की शरण ली थी और षड गोस्वामियों के आदेशानुसार ये पूरे दुनिया में महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए शक्ति प्राप्त थे. And all of us are very fortunate to be here at the feet of Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nrsingadev, Radha Madan Mohan, Krishna Balaram. It seems like all the incarnations are here. So we're very fortunate to hear Krishna Katha in such a sanctified atmosphere. तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ भगवान के सभी अवतार उपस्थित हैं और उनके चरणों में बैठकर हम चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण कर पा रहे हैं और कृष्ण कथा का श्रवण कर पा रहे हैं. In Vrindavan, sitting in the kirtan in front of Krishna Balaram, and you see so many people, they get so happy and so excited just to experience the beauty of the deities and the energy of the kirtan. वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में उनके सामने बैठकर कीर्तन करने में बाहर के आने वाले कई लोग इतनी शक्ति और इतने उत्साह का अनुभव करते हैं जब वे वहां पर आते हैं. But the attachments and the bodily consciousness is so strong that for 2-3 minutes they sit and okay, let's go see another mandir, let's go see Durga Ma, let's go see this one. So it's only those who are fortunate can actually stay and hear and continue hearing. किंतु ये देहात्म बुद्धि और आसक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि 2-3 मिनट के अंदर उनको याद आता है, ओ हमें यहाँ जाना है, यहाँ दर्शन करना है, वहाँ जाना है. किंतु ये भगवान कृष्ण के नामों में यदि कोई तल्लीन हो जाए तो यही वास्तव में हमें करना चाहिए. It's like a carnival or a circus now in Vrindavan. Hundreds of thousands of people coming, popcorn, sugar candy, and so much noise and everything, music. So people in general are bewildered on the bodily platform, but only those who are receiving the mercy of Prabhupada and Krishna at Bhakti Lata Beach take interest and put forward their energy to understand more of Krishna. तो वृंदावन आजकल मान लीजिए मानो सर्कस हो गया है. कई लोग आते हैं, कोई मुड़ी खाता है, कोई पॉपकॉर्न खाता है,
किंतु हमें वास्तव में समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद और कृष्ण के माध्यम से हमें इन शिक्षाओं को प्राप्त करना है और देहात्म बुद्धि को परित्याग करना है। So stay enthusiastic, and always remember that the devotees appreciate and love everyone. तो हमेशा उत्साही बने रहिए और ये याद रखिए कि भगवान के भक्त सभी को बड़ा प्रेम करते हैं। I'm reading about Prahlad Maharaj, how his father had tried to have him killed in so many ways. मैं प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ रहा था, कैसे उनके पिता इतने प्रकारों से उनका वध करना चाहते थे। Because he said, Prahlad, what's the best thing you learned? And Prahlad said, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. उन्होंने प्रश्न किया, प्रहलाद सबसे अच्छी बात तुमने क्या सीखी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। So Hiranyakashipu wanted to personally kill Prahlad Maharaj. हिरण्यकशिपु व्यक्तिगत रूप से प्रहलाद का वध करना चाहता था। After he killed Hiranyakashipu, he was very angry, and none of the demigods, Lakshmi ji, no one would approach Lord Nrsingadev because they saw he was really upset at Hiranyakashipu. किंतु जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का संहार किया तो उनके क्रोध से सभी इतने भयभीत थे कि लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, समस्त देवता कोई भी उनके समीप नहीं जा सकता था। All the demigods said, Prahlad, you go forward. He likes you. सभी देवताओं ने कहा, प्रहलाद तुम आगे जाओ, वे तुम्हें पसंद करते हैं। So Prahlad offered obeisances. The Lord put his hand on his head, and Prahlad recited beautiful prayers. तो प्रहलाद ने प्रणाम किया, भगवान ने अपना हाथ उनके सर पर रखा और इसके पश्चात प्रहलाद महाराज ने कई सुंदर प्रार्थनाएं प्रस्तुत की। And then Lord Nrsingadev offered him all benedictions. Whatever you want, Prahlad. You want kingdom, you want riches, you want whatever you want. I'll give you anything. नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया, तुम जो चाहते हो, तुम यदि राज्य चाहते हो, तुम धन चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, जो चाहते हो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। Prahlad said, I'm born in a demonic family. Don't tempt me. I'm not a merchant that I'm doing devotion for exchange of something. प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं तो आसुरिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है, आप क्या मुझे बनिया समझते हैं कि भक्ति के बदले में मैं आपसे कुछ चाहता हूँ? He said that you cannot be a pure devotee, not even a devotee, if you have the mercantile mentality in your devotional service. उन्होंने कहा कि यदि आपके भक्ति में लेन देन का भाव हो तो आप भक्ति हैं ही नहीं। Prahlad said, I know that when you had Hiranyakashipu, my father, on your lap, he was purified, but I want to hear from you that he's liberated. प्रहलाद ने कहा, मैं जानता हूँ भगवान, जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु आपकी गोद में थे तो आपके स्पर्श मात्र से ही वे मुक्त हो गए, किंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि उनकी क्या गति हुई। He said, not only your father, but 21 generations are all liberated. भगवान बोले, सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं बल्कि 21 पुरखों का उद्धार हो गया है। So Prahlad, even though his father was, he said, I can always remember the amount of love my father gave me. प्रहलाद कहते हैं कि मैं केवल अपने पिता के द्वारा प्रदत्त प्रेम का ही स्मरण कर सकता हूँ। So the idea of friends and enemies, or hating this one and liking that one, that's really on the bodily concept. तो मित्र और शत्रु का विचार, एक को पसंद करना, दूसरे से वैर करना, ये वास्तव में देहात्म बुद्धि के द्योतक है। Devotee, he sees equally everyone, and he wants to somehow or other be a servant. भगवत भक्त सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और वे किसी प्रकार से सभी का सेवक होने का प्रयत्न करते हैं। So Bhagavatam is full of so many beautiful messages. Read every day the Bhagavatam, Nityang Bhagavata Sevaya. Every day must hear Bhagavatam. तो भागवत में इतने सारे सुंदर संदेश दिए हुए हैं, नित्यम भागवत सेवया, इसलिए हमें नित्य प्रति भागवत का पाठ करना चाहिए। More and more Krishna Katha, then more and more your desire to go back to Krishna will develop. अधिक से अधिक कृष्ण कथा और भगवान कृष्ण के पास जाने की आपकी इच्छा और अधिक तीव्र होती जाएगी। So I like keeping time, because in Vrindavan sometimes they speak beyond the time limit. I got to cut them off. I feel bad, but everything. I'm sure everyone has so much seva and service. So
It's a great honor to speak a few words about Vrindavan, and hopefully it made sense. तो मैं वृंदावन के बारे में कुछ कह पाया और मैं समय सीमा को बनाए रखना चाहता हूँ। सभी के पास बहुत सारी सेवाएं भी होंगी। So all of you come to Vrindavan too. They invite me to Ujjain. I like to come here. You all come there. We're all one family. तो आप सभी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मैं आप सभी को वृंदावन आमंत्रित करता हूँ। हम सभी एक परिवार के समान हैं। When I looked at the ticket, I said, 5 days. I thought good. I can just relax and have kirtan here in Ujjain with all of you, right? जब मैंने अपने टिकट देखे तो मैंने कहा 5 दिन मैं यहाँ रहूंगा, किंतु अब लग रहा है ठीक है 5 दिन में कम से कम थोड़ा आराम से हरि नाम का कीर्तन कर सकता हूँ, आप सबके साथ रह सकता हूँ। Right. हरि वो Srila Prabhupada ki. जय। Is there time for a question or two or no? किसी का कोई प्रश्न है? Actually, I had one comment. Comment, yes. You were talking about, it's a story. You were talking about Srila Prabhupada meeting with reporters. आपने बताया कैसे श्रील प्रभुपाद संवादिकों से मिले थे। So it's a beautiful story. Srila Prabhupada was in UK being interviewed by a reporter. तो ये इंग्लैंड की बात है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद थे और उन्हें संवाददाता उनका इंटरव्यू ले रहे थे। The reporter asked him, "Why have you come?" उन्होंने प्रश्न किया, आप यहाँ क्यों आए हैं? Srila Prabhupada said, "Your country invaded my country and stole everything." प्रभुपाद ने कहा, आपके देशवासियों ने मेरे देश पर हमला किया और सब कुछ लूट के ले गए। They drained our finances. They took everything. सारा पैसा, धन, संपदा सब कुछ लूट गए। But they forgot the most valuable thing. किंतु वे सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल गए। They left Veda, they left Mandir, they left Goraksha. उन्होंने इन 3 चीजों को छोड़ दिया, वेद, मंदिर और गौरक्षा। So I've come to your country to bring it back. तो मैं आपके देश में इन्हें वापस देने के लिए आया हूँ। और प्रश्न है? Hare Krishna Prabhu, thank you for a wonderful presentation and class. My question is that you were speaking about how difficult Kali Yuga is. Everyone's suffering so heavily here. And then Vyasadeva compiled for our benefit the Srimad Bhagavatam and message of Krishna consciousness. व्यासदेव ने हमारे भले के लिए श्रीमद् भागवतम में कृष्ण। And you mentioned that you were attracted by the way Srila Prabhupada presented Krishna and the teachings. So could you kindly elaborate on what was it that attracted you, especially to the message and Srila Prabhupada's presentation? Yeah, मुश्किल प्रश्न है। I like the singing and dance. I play drums in a rock and roll band, so we had something in common. So I still play drums sometimes too. Not you though. Just reading. I start with Sri Shopanishad and Science of Self-Realization, and the way Prabhupada worded everything so clearly and so logically, it just was so easily digestible. मैं श्री उपनिषद को और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का पाठ कर रहा था और श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है बड़ा तर्कसंगत है और मैं इससे आकृष्ट हो गया। Because being foolish, I was doing TM, Transcendental Meditation, with Maharaja, Mahesh Yogi, and reading his Bhagavad Gita. Didn't make much sense. एक मूर्ख होने के कारण मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर रहा था और महर्षि महेश योगी के गीता को पढ़ रहा था जिसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। So as I went to the barber. I had hair back then, and there was a devotee in disguise, and we started speaking about Bhagavad Gita.
तो मैं एक नाई के पास गया जो कि मेरी हजामत बनाएगा, और वो मुझे भगवत गीता बोलने लगा. And after receiving Prabhupada's Bhagavad Gita as it is in Back to Godhead magazine, it just made so much clarity. It's from the clouds dispersed and the sunshine came. श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता और भगवत दर्शन पत्रिका को पढ़ने के बाद मेरे सभी संशय दूर हो गए, मानो सूर्य से आच्छादित, सूर्य को आच्छादित करने वाले मेघ दूर हो गए हों और रोशनी की किरणें सामने आ गई. And on the back of the Back to Godhead magazine, I saw Vishnu Jan Swami playing the mridanga. There's a bus, and everybody was very colorful and prasadam. Come and sing, dance, feast with us. And I thought, what a deal. तो उस समय विष्णुजन महाराज बैक टू गॉडहेड मैगजीन के पिछले पृष्ठ पे उनकी छवि थी, वे मृदंग बजा रहे थे, तो हर कोई आकृष्ट कर रहा था कि यहाँ पे आइए, नाचिए, गाइए. तो कितना अच्छा मौका है. So we're all very fortunate. This is still the pioneering stages. Krishna consciousness is propelling, will take off. There's no other solution to happiness or peace. तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं. कृष्ण भावनामृत का प्रचार आगे बढ़ रहा है और शांति और सुख के लिए और कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है. So Prabhupada's smile and Prabhupada's love and compassion was enough for all the devotees to stay enthused in Krishna. प्रभुपाद की कृपा और प्रभुपाद की शिक्षाएं ये सभी को कृष्ण भक्ति में रखने के लिए काफी थी. प्रभुपाद की हंसी, स्माइल. Yeah, when we were in Washington, the kirtan was going on and Prabhupada did this, and then everyone started jumping like हम लोग वॉशिंगटन में थे, कीर्तन चल रहा था और kangaroos. प्रभुपाद जी ने इशारा किया और सब हम लोग जोर जोर से ऊपर उछलने लगे. So if you're doing kirtan together, Chaitanya, Mahaprabhu and Lord Nityananda, Krishna himself, Prabhupada, they're all present, all the spiritual personalities. जब हम कीर्तन करते हैं तो गौर निताई, भगवान कृष्ण, श्रील प्रभुपाद, सभी कोई यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहते हैं. So do kirtan, that's devotional service. Read Bhagavatam, that's devotional service. Read Gita, it's, taking prashadam, it's all devotional service. But of course, beyond that, we can also use our talents to help spread Krishna consciousness. आप कीर्तन करें तो ये भी भक्ति है, आप भागवतम पढ़ें तो भी भक्ति है, प्रसाद ग्रहण करें वो भी भक्ति है. किंतु यदि हमारे पास कोई विशिष्ट प्रतिभा हो तो उसका प्रयोग हम कृष्ण भक्ति के प्रचार में कर सकते So I think now we're going to have more bhakti by eating prasad, right? हैं. तो अब प्रसाद ग्रहण करके हम अपनी भक्ति का वर्धन करने वाले हैं. Prabhuji has one question that you have mentioned in your lecture that Prahlad Maharaj said that I know that my father has delivered. So he is asking that how can we understand that our ancestors has delivered? Well, after, especially Lord Nrsimhadev put his hand on Prahlad's head, he's fully realized he was already a pure devotee. But as a devotee, he understood that anyone killed by the Lord is delivered. And so he understood that when Hiranyakashipu was put on his lap and killed by the Lord directly, he was delivered, but he wanted to still express to the Lord that he wanted his father. That just shows the great compassion of the devotee. I don't know if you can explain. No, but the question was, how can we understand? How can we understand, or how can Prahlad how can he understand? How can we understand that our ancestors have been delivered? That was the question. Because Mahajano Jainagata Sapanta, we're hearing from authority. Our whole philosophy is a descending Guru Parampara. So either we can speculate about, who is my father, or the ascending process. How they give the example? I'm sorry. Like the kitten carries the cat within the mouth. जैसे कि बिल्ली अपने शावक को मुंह में उठाकर चलती है. And the monkey, the monkey has to hang on to the mother. और बंदर को अपनी माँ को स्वयं पकड़ना होता है.
So our process is one of descending process, Guru Parampara. And it starts with Shraddha, with faith. We have faith in Guru, we have faith in Krishna, we have faith in that what we're hearing is the absolute truth. तो हमारी गुरु परंपरा की पद्धति है, हमें भगवान कृष्ण में, अपने गुरु में श्रद्धा होती है और इस प्रकार से श्रद्धा से हम श्रवण करते हैं. So Shraddha, Sadhu Sangha, Anartha Nivritti, all our doubts and confusion goes away by good Sadhu Sangha. Your faith increases. तो श्रद्धा से जब हम साधु संग करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति होती है और जब अच्छे भक्तों का संग करते हैं तो हमारे सभी संशय दूर हो जाते हैं. So thank you very much, everyone. Srila Prabhupada ki jai. His Grace पंचगौड़ प्रभु की जय. हरे कृष्णा. His Grace पंचगौड़ प्रभु जी ने बहुत अद्भुत तरीके से बताया कैसे श्रील प्रभुपाद ने हम सभी को सभी मंदिरों में वृंदावन दिया है और उसके माध्यम से हम श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, अन्य शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं. मॉर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं. तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं. एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. His Grace पंचगौड़ प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की. तो अभी as Prabhuji told, now we will get bhakti by honoring prasadam. So we request all devotees to please go to the Gaushala Pandal. There prasadam is already started. तो सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसादम के लिए रिस्ट बैंड की व्यवस्था की गई है ताकि आप लोगों को असुविधा न हो. पंडाल के बाहर ही रजिस्ट्रेशन टेबल है, वहां से भक्त लोग रिस्ट बैंड कलेक्ट कर सकते हैं. ध्यान दीजिए 10 बजे श्रील प्रभुपाद, we will have escorting of Srila Prabhupada from the temple. So we request all devotees to please be present in the temple. 10 बजे Srila Prabhupada जी को शाही सवारी में प्रभुपाद जी विराजित होंगे और उनकी अगुवाई में कीर्तन नृत्य करते हुए हम सभी ऑडिटोरियम में जाएंगे. आगे के कार्यक्रम ऑडिटोरियम में ही होंगे. वहाँ श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा होगी और उसके बाद प्रभुपाद कथा देंगे हिज ग्रेस सर्वदृक् प्रभु. तो आप सभी से निवेदन है 10 बजे मंदिर प्रांगण में उपस्थित हों. हरे कृष्ण.